Hello students. So in the today's lecture we are going to discuss a very important topic of geography. It is known by the name layered structure of the earth. इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अर्थ के अंदर तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जिनका नाम है क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. नाउ हम लोगों को सबको पता है कि ये जो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर है इसकी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. सो ऑब्वियसली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टीज़ पता कैसे चली. सो दीज प्रॉपर्टीज़ हैव बीन स्टडीड बाय द हेल्प ऑफ सेस्मिक वेव्स. सेस्मिक वेव्स के डिटेलिंग हम लोग अर्थक्वेक में पढ़ते हैं. जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो वेव्स होती हैं दैट इज़ सेस्मिक वेव्स, जिसका बिहेवियर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है. And we study under primary and secondary waves. So our first important layer is the crust. So the thickness of the crust is almost 35 kilometers. ये सबसे outermost layer है अर्थ की. We have three layers: crust, mantle and core. Crust is the outermost and the most thinnest layer of the earth, which forms a very solid surface. इसी क्रस्ट के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज बेसिकली योर लैंड वेयर यू लिव. ओशनिक क्रस्ट इज योर ओशंस विच गिव्स यू वाटर. सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होती हैं एंड इट कंपोज्ड ऑफ लाइटर रॉक्स. ज़्यादातर ये ग्रेनाइट की बनती हैं. फॉर दैट रीज़न द डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेसर देन द ओशनिक क्रस्ट. आगे हम पढ़ेंगे कभी कभी इन दोनों प्लेट्स का कोलिजन भी होता है. तो जब इन दोनों प्लेट्स का कोलिजन होता है उस समय पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है उसमें से ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट करती है, मतलब उसके नीचे चली जाती है क्योंकि वो भारी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट फॉर द क्रस्ट इज इट इज़ हाईली फ्रैगमेंटेड. इसका ये मतलब होता है कि क्रस्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सो बेसिकली इट इज़ वन प्लेट एंड फॉर after because of high temperature and pressure for so many years it is acting. For that reason the plate lithosphere, it broke into many small pieces in very fragments. That is, crust is highly fragmented, or it forms a part of lithosphere which is a broken off into tectonic plates. और यही जो लिथोस्फेयर है ये किस पे फ्लोट करती है? इट फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर. ओके. Next is oceanic crust always subducts because it is made up of basalt, which is heavier than continental crust, which is made up of granite. I told you right now, oceanic crust is more heavier. Next is continental crust has more silica, while oceanic crust has more iron and magnesium. I hope you are clear with the crust. Now let's discuss about something, the mantle. Again, the mantle is it lies the beneath the crust and extends up to a depth of 2900 kilometers. So it is the thickest layer of earth. Thickest layer है and 2900 kilometers है. Again it is composed of silicate rocks which is rich in iron and magnesium. ठीक है. और ये जो आपका मेंटल है, I'm sorry एक सेकेंड. So the mantle, basically the mantle is divided into two pieces. आपको right side में दिख रहा होगा, we have written the notes of the mantle. It is again upper mantle and lower mantle. upper mantle के अंदर एक important layer है asthenosphere. इसी के ऊपर सारी tectonic plates move कर रही हैं. और जो lower mantle है it is more rigid and denser due to high pressure. Now the most important point is जो अपर मोस्ट, जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यू कैन सी दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम आई हैव शोन दैट दिस इज योर अपर मोस्ट मैंटल एंड दिस इज योर क्रस्ट. इसके बीच में ये एक लेयर आ रही है विच इज कॉल्ड नोन एज मोहरविक डिसकंटिन्यूटी. सो इन दिस डिसकंटिन्यूटी, बेसिकली डिसकंटिन्यूटी इज व्हेन सेस्मिक वेव्स पास्ड देर इज एन एब्रप्ट चेंज इन द वेलोसिटी. वेलोसिटी एकदम से चेंज हुई, एकदम से अप डाउन हुई. फॉर दैट रीजन this boundary between the crust and the uppermost mantle is known as Mohrvik discontinuity. इस discontinuity का नाम एक geographer मोहर के ऊपर रखा गया है. So I hope you are clear with the mantle also. Let's discuss the third and most important part, the core. It is the innermost part of the core. Its thickness is 3500 kilometers and it is composed of iron, nickel, and it is basically called metallic core because we have metals in it. Again the core is divided into two parts, outer core and inner core. So outer core, it is basically liquid in the state and it generates magnetic field also. inner core गर्म होते हुए भी वो solid है क्योंकि इसके अंदर immense pressure लग रहा है. So I hope
I am clear with the all the three layers of the earth. You can see the layer of the earth, crust, mantle, core, and you can see this diagram. This diagram gives you an image how it is designed. So I hope you are clear with this, and for such more informative lectures, please subscribe our channel. We are going to upload many more lectures about the geography and many more learning things. Thank you so much.